Okay, students, so we continue with our exercise 4.1 of quadratic equations. Now, in question number second, we have to represent the given word problem in terms of quadratic equation. So the question is the area of a rectangle plot is 528 meters square. Area is given and the relation between the length and breadth is given, that the length is one more than twice its breadth. So how to start? So the breadth let the breadth of a rectangle be x meters. Okay, so what will be the length? So therefore length of rectangle is, just read out it, क्या लिखा है? The length of a plot in meters is one more than twice its breadth. यानी breadth के डबल से एक ज्यादा, one more than twice its breadth. So this is the length and breadth, and we know that the area of rectangle is length into breadth. So हमें क्या given दिया है? Since area of rectangle is given to be 528 meters square, so this means length into breadth is equal to 528. Okay, now put in the values. Length is 2x plus 1, breadth is x. Now you have to multiply it. So actually हमें क्या करना है? हमने इस स्टेटमेंट को, इस वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है. So when you multiply it, what do you get? 2x into x, 2x square plus x. Shift this to this side, minus 528 equal to 0. So this is how you will get the quadratic equation. Understand, students? So similarly, we have to convert other word problems in the form of quadratic equations. So let's start with the second part. The product of the two consecutive positive integers. Now students, consecutive means in continuity. So if one is x, other one is x plus 1. So let the two consecutive positive integers be x and x plus 1. Okay. Now what is given? It is given that its product is 306. So product means x multiplied by x plus 1. So the product of these two integers is given to be 306. So product of integers is given to be 306. This means x into x plus 1 is equal to 306. So open it. X into x, x square plus x. Shift this 306 to this side, it will become minus 306. So in this way we have to convert them into quadratic equation. Understand बच्चे? तो एक्चुअली हमें इस पे ये नहीं बोला हुआ है कि find the integers or find the length and breadth. It is just given that we have to represent it in the form of quadratic equation. If you want, you can, when you solve it further, you can also find out their length and breadth. Okay, so now then similarly we have a third part. So students, so let's continue with the third part. Rohan's mother. Now in this part there is a relation between Rohan mother and Rohan. So the third part, Rohan's mother is 26 year older. Older means उससे बड़ी है. Than him, than Rohan.
So how to get the relation? So let the present age of Rohan be x years. So therefore the Rohan's mother's present age कितनी हो जाएगी बेटा? क्या लिखा है? 26 ईयर ओल्डर, मतलब रोहन की एज प्लस 26. सो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. स्टूडेंट्स वी हैव टू याद रखना बच्चे, हमें एज को भी रिप्रेजेंट करना है. इफ राइट जस्ट एक्स, सो एक्स तो कुछ भी हो सकता है, बट हमें लिखा हुआ है एज, दिस मस्ट बी इन ईयर्स. सो therefore Rohan mother's present age is what? 26 years older, means x plus 26 years. Got it? Now the relation is the product of their ages 3 years from now. अब 3 years from now मतलब अगर मान लो आज किसी की एज 10 years है, so what's the age 3 years from that age, that year? It is 10 plus 3. Similarly अगर आज किसी की एज x है, so what his age after 3 years? It is x plus 3. So students, according to question क्या दिया हुआ है? The age of Rohan's from 3 years from now. Rohan's age 3 years from now. वो क्या हो जाएगा? वो x plus 3 years. Okay? And Rohan's mother's age 3 years from now. Rohan's mother's age 3 years from now. अब बेटा आज इतनी एज है x plus 26 and 3 years from now means plus 3 years, that is x plus 29 years. Okay, now what is the relation? That the product of their ages is given to be 360. So therefore x plus 3 into x plus 29 gives 360. So x into x square, 29 into x, 29x, 3 into x, 3x, 3 into 29, we get 87 is equal to 360. Okay students, so we have to open them one by one. X into x, x square, x into 29, 29x, 3 into x, 3x, and 3 into 29, 87. Now what will be your equation? 29 plus 3 is 32x plus 87 minus 360 equal to 0. So x square plus this minus, so when you subtract it, what you get? 3, 7, 273. Okay students, so in this way you will get the quadratic equation of the given word problem. Okay students, so students जब भी कभी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो you have to read the question very carefully, write them in the form of the given relation, and then you have to find it for quadratic equations. Now the next part, a train travels a distance. Now here you have given a relation between the distance traveled by a train, the speed of a train, and the time. So students, we know the formula between the speed, distance and time. What is that? That is speed is equal to distance upon time. Okay students, so first of all you read the whole question and just find out that what is given in this. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. अपनी स्पीड में चलती है तो वो 480 कवर करती है डिस्टेंस. If the speed had been 8 km per hour less,
अब कह रहे हैं अपनी स्पीड से अगर वो 8 किलोमीटर कम हो जाए देन इट वुड टेक 3 आवर मोर. ऑब्वियसली बात है बेटा, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगाएगी. सो हाउ टू स्टार्ट विद दिस? सो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x. So let the usual speed of train be x. Let the usual speed of train be x kilometer per hour. X kilometer per hour. So therefore the decreased speed of train कितनी दी है हमें बेटा? 8 किलोमीटर पर आवर लेस. किससे? पहले वाली स्पीड से. तो इट इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 480 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन is 480 kilometers. So students, if speed is given and distance is given, can we find the time? Yes, we know the relation that since speed is equal to distance upon time, so what is time? Distance upon speed. So therefore now we have to find two times, one with this speed and other with this speed. So therefore time taken by train with usual speed, वो क्या हो जाएगा? That is distance, speed is equal to distance upon time. तो टाइम क्या हो जाएगा? Distance upon speed. So distance is what? 480 and speed is x hours. Okay, now and time taken by train with decreased speed is what? How much? Distance remains same, but now speed is what? x minus 8 hours. अब बेटा ये भी टाइम है, ये भी टाइम है. Now just read the question. क्या लिखा है इसमें? When the speed is decreased, the train would have taken 3 hours more. Obviously बात है बेटा कि जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा. So what is the relation? So therefore according to question, this speed is equal to this x minus 8. ये भी टाइम दिया, ये भी टाइम दिया. इन दोनों टाइम में 3 आवर्स क्या है? ज्यादा लिए हैं. कब? जब उसकी ये स्पीड थी. तो मतलब टू बैलेंस इट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इट. ओके, जैसे बेटा आई रिपीट इट, ये थोड़ा सा सोचने वाला है. देखिए बेटा x माइनस 8 इज द स्पीड. ये स्पीड कम है इसके मुकाबले. जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है ना बच्चों, है ना? तो उस टाइम को सेम करने के लिए क्या करेंगे हम यहां से 3 माइनस कर देंगे. ओके, नाउ सॉल्व इट. 480 upon x equals to what is the LCM now? X minus 8. So what you get? 480 minus 3 times x minus 8. Okay, now just simplify it. 480 upon x. In the denominator we get x minus 8. Now what we have? 480 minus 3 into x minus minus plus 8 3 is 24. Now simplify it by cross multiplication. Now 480 into x minus 8, x को वहां शिफ्ट कर दीजिए आप. 480 minus 3x plus 24 times x. Now students, you have to simplify it to get the quadratic equation. Now 8 into 480.
3840. Now 480 into x, 480x minus 3x into x, 3x square plus 24x. Okay, students. Now, when you shift these terms to this side, what you have? 480x minus 3840 minus 480x plus 3x square minus 24. Because we know that when you shift the terms of plus to other side, we will get minus. Now cancel all the terms. This is cancel with this. So the ultimately you get this conjugation 3x square minus 24x and minus 3840. Okay, students. But we can further simplify them. कैसे? By taking 3 common. So if you take 3 common, what do you get? X square minus 3824 minus, when divided, what do you get? 3 1 3 2 6 3824 into 0 equals to 0. Now shift this 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. So x square minus 8x minus 1280 is equal to 0 by 3, and ultimately you will get this quadratic equation minus 1280 equal to 0. Understand, students? So in this way we can convert the relation between the speed of a train, the distance covered by it, and the time taken in the form of quadratic equation. Got it, students? Okay. Now बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि how we know that the question is of quadratic equation or linear equation two variables. Okay, students? Because अभी आप करके आए हो linear equation two variables. Now we start with the quadratic equation. But in exams, how you know that a particular question is of linear equation or quadratic equation? तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है. If you start the question in the form of linear equation, तब भी equation same ही आएगी. Let us do the question number second first part. Okay, बेटा. Now if you read this question, what you get? देखिए बेटा क्या लिखा है इसमें. The area of the rectangular plot, वो हमें given दिया है. The area of rectangular plot is given to be 528 meters square. Now the relation between length and breadth is given. But जब यही क्वेश्चन अगर आपको आता लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, तो हम कैसे करते हैं? हम लेट करते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड द ब्रेड्थ इज y. ऐसे ही करते हैं ना हम. तो हम यहां भी वही करेंगे. हम लेट द length of rectangle be x meters and the breadth of rectangle be y meters. मैं आपको समझा रहा हूं बेटा. इसको ये नहीं है कि आप एग्जाम में सोचोगे कि हमें कौन बताएगा कौन सी यूनिट से है क्वेश्चन. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दी हुई है? नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखे हैं? दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528. एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो एरिया इज गिवन टू बी 528. तो मींस एरिया क्या होगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 528. ओके स्टूडेंट्स. सो अब लेंथ कितना दिया हुआ है हमें? x. तो x इंटू वाई इज 528. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब आपको यहीं पर पता चल जाएगा ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है. इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन का नहीं है. बट कोई बात नहीं, वी कंटिन्यू इट. आगे क्या दिया हुआ हमें? The length of the plot. This is the second condition. According to the second equation, the length means x
is, what is given, 1 more than twice the breadth. Breadth is y. ये हो गया बच्चों. सो अब इसको मान लीजिए सेकंड. तो बेटा क्या होगा, हमने इसका रिलेशन निकालना है. तो क्या करेंगे बेटा, वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x हियर. सो पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ x वी पुट 2y प्लस 1, यहां पर y आ गया, इज इक्वल टू 528. तो 2y इंटू y is 2y square plus y, shift it here, you will get minus 528. तो आप देखोगे इक्वेशन वही आई, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे इनको फर्दर टू गेट द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ x और y वही आएंगी. तो बेटा आपने ये नहीं सोचना है कि अब हम क्या करें, हमें क्या पता कौन सी यूनिट से आया है. तो बेटा जब जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी तो समझने के लिए. और वैसे भी आप जब देखोगे कि जहां कभी भी मल्टीप्लाई वाला रिलेशन आ गया, आपको पता है जब मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर इक्वेशन तो रहेगी नहीं, बिकॉज इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा. जबकि लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 1 होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे you are able to convert, you have to use this way of solving the questions also.